Rahim. Before we formally begin the session, let's have the recitation of Holy Quran. بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العظيم. Assalamu alaikum, ladies. Can everybody hear me? I think we just had a little glitch or some, error over here. So let's begin the session. And assalamu alaikum. It is a great pleasure to see all of you enthusiastic women gathered over here, which just encourages us and it reassures us that together we can build a strong and firm ecosystem for the women entrepreneurship development. Without further ado, I take this opportunity to introduce Mr. Farhan Aziz Khwaja, CEO Samida. Farhan Saab is an eminent officer from the civil services of Pakistan. He has many significant assignments to his credit throughout his prosperous career over 3 decades. Over to you, Farhan Saab. Thank you, madam, for this kind introduction. And I would also, at the outset, take this opportunity to congratulate all the participants of today's event. And especially because we are holding this event one day prior to the 8th March, a significant day of Women Day. I would, on behalf of SMEDA, like to say a few things. That SMEDA is an organization that is dedicated and mandated by the government of Pakistan to develop and focus on SME sector. And within the SME sector, we have been working at women entrepreneurship, increasing their representation in Pakistan across various levels of the economy. And I'm very excited today, and our team over here, led by Madam Tania Buttar and Madam Nadia, who shared with me that we are going in the next few years, women entrepreneurship is going to be a key strategic point within SMEDA's day-to-day functioning and its planning, policy planning, and also, more importantly, the activities that are going to be generated. So I would request all the participants of today's event to kindly share their perspectives, personal, professional, and more importantly, provide us the key inputs, which in the present day Pakistan, with all its challenges at the macroeconomic level, at the societal level, which are confronting women, and in the women entrepreneurship journey, that the challenges they are experiencing and they foresee, to give us an input on that. And I assure you that not only today, through today's event, but many such events in the future, which I would request Madam to kindly share the details with all of you. We would like to incorporate that particular input in the future planning of design of us. And we would also take many of these inputs in focus group discussions in future. So all the participants of today, once again, I would welcome you to SMEDA, and I would request you that not only in today's session, in writing, through emails, through various kind of interactive methods, you can give your input.
But more importantly, when we hold our dedicated sessions in the future, I would request that we can have a more structured discussion on many of these aspects. So with these words, I would beg leave from today's event and hand it over to the safer hands of Madam Tania and Madam Nadia. And I wish you all the best and hope to meet you again in other structured events like these, so we are able to give and hold our share in the women entrepreneurship journey of Pakistan. Thank you. Thank you very sir. much. Thank you. Thank you for your kind word. Now, ladies and a few gentlemen, I take this opportunity to introduce Ms. Nadia Jangir Seth. Nadia has been with Samira for over 2 decades. Currently, she's heading the policy and planning division of Samira. So I hope I leave the whole discussion and webinar in Nadia's hands, and I hope that it is as dynamic and as excited I am for it, and it goes very, very well. And our panelists also add a lot of value to it. So over to you, Nadia. Thank you, Tanya, for this introduction. I'd like to take this opportunity to thank all our participants, especially our panelists who've taken the time out to share their experience as a woman entrepreneur in Pakistan. What challenges have they faced, how they have been able to surmount these challenges and bring a good name, not just for themselves, but for the country as a whole. We already know, if we look at the statistics related to female labor force participation, they're quite dismal. Only 21.4% women are associated with the labor force. That's the labor force participation rate. I'll take a moment to introduce my panelists for today, an illustrious panel, as I'd like to put it. Nadia, if I may, आपसे पैनलिस्ट से रिक्वेस्ट है जी, प्लीज आपके इंट्रोडक्शंस हम करवा रहे हैं, तो काइंडली प्लीज आप अपने अगर कैमरास ऑन कर लें, सो सबके साथ फेमिलियर हो जाएंगे सारे ऑडियंस आप लोगों के साथ. थैंक यू सो मच. आई एम सो सॉरी. जी, Miss Fariha Umar. Fariha has over 25 years of experience in the government and INGO sector. She's associated with the UN Women and is the program lead for women's economic empowerment and sustainable livelihoods in Pakistan. She focuses on fostering dialogue and advocating for recognition of economic, social needs of various population groups while prioritizing evidence-based knowledge products to inform practices. Joining us today is Ms. Masooma Siptain, CEO Trends, former Vice President FPCCI, President Women Chambers of Commerce, and a lead women business agenda. Masooma is also an entrepreneur and an activist, a policy advocacy activist. With over 25 years of experience, she possesses the ability to motivate others and polish the entrepreneurial streak of women. We have a very young and dynamic panelist today, Ms. Hasna Sami, Director, Samad Group of Industries and CEO, Smad Foam Unit. She is a graduate from the University of Toronto in International Development Studies, and as one of the few women in a C-level executive role in Pakistan's manufacturing sector. Hasna has been a trailblazer in advancing the development of bio-based foams in the country and has successfully catered to the requirements of major brands such as Adidas, Decathlon, and Wilson. Ms. Fatma Zaka is founder and CEO of the Ferment, a women-owned and led fresh and premium produce distribution venture based out of Lahore. Ms. Zaka has formerly worked with the UNDP, Deloitte, LUMS. She's a degree holder in accounting and finance from the University of Sheffield. We are joined by Ms. Paika Naseem from the State Bank of Pakistan. She's been the lead in the gender initiative and the focal person for the banking on equality policy of the State Bank of Pakistan, which aims to reduce the gender gap in financial inclusion in Pakistan. And finally, for our closing, we will be joined by Ms. Zeba Bakhtiar, former President, Women Chambers of Commerce and Industry, Quetta. She's a public figure and entrepreneur. She takes pride in her social and philanthropic work, having worked for the empowerment of women in various spheres. Her dynamic personality and dedication towards her pursuits have made her a prominent figure in Pakistan. Thank you, panelists, for joining us.
Before I dive deep into, taking this opportunity to have a candid discourse with our worthy panelists, I'd just like to share very briefly that SMEDA over the years has been playing a significant role in promoting women entrepreneurship in Pakistan through various endeavors. These include research work that we have undertaken in for women entrepreneurship, so that we would have evidence in our evidence to inform our program and project design for supporting women entrepreneurs. We have facilitated women in linking them with markets through exposure visits, through sponsoring their participation in local and international exhibitions. And just to very briefly share with you all, I'd request my colleague if we could just very briefly share a video of some of the support that SMEDA as an institution has provided for women entrepreneurship. Thank you. This was just to share some of the support that SMEDA over the years has been providing to women entrepreneurs. Moving forward, जैसा कि फरहान अजीज ख्वाजा सी SMEDA ने अपने ओपनिंग एड्रेस में आपको इन्फॉर्म किया कि SMEDA is going to take gender mainstreaming as a key focus area moving forward, which will be integrated across all our programs. इस सिलसिले में we are currently in the process of developing the first ever women's entrepreneurship policy, जिसमें हम आप सबके पास इस वेबिनार के बाद भी हम फोकस ग्रुप डिस्कशंस एंड इंटरव्यूज के थ्रू और डिफरेंट सेमिनार्स के थ्रू आपके इनपुट को सोलिसिट करेंगे. So we look forward to our interaction over time with our worthy participants. We look forward to hearing from our panelists as well. Before I go into the questions, may I request all participants to kindly switch on their videos so that we can have a group photo, and then I'll dive directly into the questions right after that. अगर आप सब अपने videos on कर दीजिए for a group photo to commemorate today's event at the eve of International Women's Day. Please, thank you. लेडीज जिन जिन के कैमराज अभी ऑन नहीं है, प्लीज अपने कैमराज ऑन कर लें. स्पेशली हमारी बलोचिस्तान की खवातीन थोड़ी सी शाय अवे कर जाती हैं. दैट विल बी नाइस. एक ग्रुप फोटो हो जाएगी विमेंस डे के पॉइंट ऑफ व्यू से. जी, हम आप सबका वेट कर रहे हैं. हाँ जी.
Thank you very Thank much, Ji. Thank you very much. जी, so now moving on to our panelists जिनको हमने काफी देर से wait करा रहे हैं. Anyway, so I'll begin my discourse with Miss Fariha Umar. She is associated with UN Women. Thank you, Fariha, for joining us today. Now, UN Women is at the forefront of the world in terms of equality, equity, and women's economic empowerment. I'm sure our panelists and our participants are very much interested to know your operations, your programs that that the UN Women is currently supporting across Pakistan. Over to you, Fariha. Fariha, if you could kindly unmute yourself. Okay, Ji. Okay, this is fine. There was an instruction there that I can't unmute it. Thank you very much, Nadia, and thank you to all of you for inviting UN Women around the table. I think this is a very opportune moment for us and you as well to bring in the 50% of the population pyramid into the economic realm. Talking about UN Women, I would like to, put it on the table that it's a specialized agency on gender equality and women's empowerment, and it has a triple mandate. When I say triple mandate, the first is that it has a role of coordination within the UN system on gender equality. Second is the normative work, where it helps the member states to report and implement on the international commitments like CEDAW, SDGs and all. And lastly, as an specialized agency, we bring in specialized practice models which promote gender equality and women's empowerment. And we, as UN Women in Pakistan, are focusing 30 districts around the landscape in all the provinces in Gilgit-Baltistan, and we work with diverse partners. The focus area is ending violence against women, women's economic empowerment, women, peace and security, and humanitarian. So we have a mix of programmatic focus, but we are very, very fine-tuned within these program areas on women's empowerment and gender equality. Ji, Fariha, thank you for sharing that. What we'd like to understand is why is it important to take gender concerns into account in program design and implementation, and how best to do that? I think that's a very valued question, because when we look at even let's talk of a program which is addressing the health needs of the population. So looking at women, men, boys, girls, their needs, priorities, and capacities are different. So, and then when we zoom into women, women are not a homogeneous category. So we need to understand the variations. That's my point one. And then when we talk of the roles of women and men, they are different and they have different demands. So obviously, when we have to meet the needs, the approaches have to be different. And then what is very important is that when we look at these different approaches and we want to address the power imbalances, automatically there is going to be a change in life, which may be gradual, slow, or fast, whatever the intervention is. So we need to track that. We need to measure that, and we need to see that if we are going towards the right direction or not. So gender mainstreaming, gender equality, women's empowerment is an integral element of programming and planning and implementation. And over the past 10 plus years in Pakistan, UN Women has been very, very focusedly intervening into different areas. And I have mentioned the programmatic focus earlier in the previous question.
Thank you, Faria. I'll circle back to you. I'd just like to loop in Miss Masuma Sipten. मासूमा, आपका women business development agenda के साथ बड़ी association रही है. You have been an ardent supporter and advocate for women's entrepreneurship development in Pakistan. आपकी association Federation of Pakistan Chambers of Commerce के साथ भी रही, Women Chamber के साथ भी रही. आप एक business woman भी हैं. मैं ये जानना चाहती हूँ कि आपका जो interaction government के साथ रहा है, वो एक तो आपने how have you been able to carve that niche of bringing in the gender perspective in the policies that the government has already framed, and what kind of a role can the public sector play in women's empowerment? Over to you, Masuma. Ji, Masuma, could you unmute yourself? I'm sorry, if you could kindly unmute yourself. Ji. We still can't hear you. जी Masuma. अस्सलाम वालेकुम everyone. सबसे पहले तो I'm really happy and congratulate you all, the women and the men, because when we talk about the equality and the empowerment of women, we cannot work without men. For me, equality means equal rights. What are the equal rights? The rights which are given to the woman in our religion, in our society. कि हमें कहाँ पे equality चाहिए कि whatever our rights, like men enjoy their rights, we should be enjoying those rights too, on the same equal level. And I am really lucky enough to have, I will say कि मेरे साथ मेरे husband, मेरे father-in-law, around मेरे साथ बहुत सारे artisans थे male जिन्होंने काम किया है मिलके. और फिर जब हम when we worked on policy advocacy and everything, I would see the male champs which are always been supportive, and they were helping us to achieve our goals. This Women National Business Agenda is very close to my heart. Basically, I would like to tell that by profession, I'm an entrepreneur. I run my own brands from last 25 years. And we are largest selling brand, और अपने brand में मुझे बहुत सारे international awards मिल चुके हैं, और I have engaged thousands of artisans in my own factory, and they are not only working for me, they are working for मतलब जब वहाँ से trained होके जाते हैं तो वो और जगह भी एक productive part बन जाते हैं. So when we were there and when the Women Chamber came to existence in 2008, we realized कि issues क्या हैं कि जब हम बात करते हैं entrepreneurship development की इसकी, तो एक चीज basic क्या सुनने में आती है कि शायद जो आपके इदारे हैं, they are not supportive to you. I totally disagree with it. एक छोटी सी एग्जांपल देती हूँ. We were part of State Bank का एक उन्होंने focus group बनाया होता है. We were part of that group, and उस group का सिर्फ part बनने से we will able to work on advocacy of loans for 5% loan for women entrepreneurs, and there Sameda was there to support इसकी पूरी advocacy में. And then when I was in Federation of Pakistan Chamber of Commerce, I was able to work on this document, that is Women National Business Agenda. और इसकी सबसे successful बात क्या थी कि what we believe is that when we talk about entrepreneurship, we want to bring women in mainstreaming. We cannot work alone. जिसमें जब तक हमारे साथ हमारे इदारे साथ नहीं होंगे, like Sameda, TDAP, State Bank, Trade Policy Framework, they all need to work together in a synergy. And in this document, we gave many recommendations, and they all are part of upcoming policy. और एक छोटी सी interesting चीज यहाँ मैं जरूर share करूँगी. It is for the encouragement for all. कि ऐसा नहीं होता कि सिर्फ projects लेके काम कर रहे हैं. ये इदारे इतने अच्छे हैं कि हमारी सुनते हैं. Like जब हमने काम शुरू किया था State Bank की credit guarantee scheme के ऊपर, we realized banks are not ready to listen to us, and women are not able to work on their documents according to bank requirements. There, Sameda really helped us. और हमने एक छोटा सा financial literacy program बनाया with the support of Sameda Punjab, our First Women Bank, Multan Women's Chamber, and State Bank. And we were able to give loans to many women in Multan. So what we say that these institutions are here, they are ready to support here.
we need to believe them and we need to be in connection with them. Like when they are organizing this Zoom meeting, they just said, be there, and I was be there. And I am with both of these dynamic girls, I think from the last 2 decades. And I think we are here celebrating the achievement of many initiatives we have done together. बिल्कुल जी मासूमा, थैंक यू सो मच। और क्योंकि आपने स्टेट बैंक की बात की, वी आर लकी टू हैव फाइका नसीम विद अस फ्रॉम द स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, who has developed and is now also a focal person for the gender mainstreaming policy, which is the banking on equality policy with state bank ki. Faika, would you share the broad focus areas of this policy, and also jab aapka ye development process hua, what was the thought process, and then where do we stand in terms of implementation of the banking on gender, and of course the financial inclusion strategy which has been in place for several years now. Faika? Assalamu alaikum. Thank you so much for inviting me. And सबसे पहले तो मैं स्नीडा का शुक्रिया अदा करूंगी. And Sneeda must be commended for their work, for not only boosting entrepreneurship, but especially for prioritizing Khawateen ki entrepreneurship and for holding this event. So coming to your question, आप बिल्कुल सही कह रही हैं कि स्टेट बैंक के लिए जेंडर एंड वुमेन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन एक प्रायोरिटी है, और हमने बहुत से इनिशिएटिव्स लिए हैं, जैसा कि मैम मोमना ने भी अभी मेंशन किया कि स्टेट बैंक की स्कीम्स भी हैं फॉर वुमेन्स फाइनेंशियल इंक्लूजन. लेकिन क्लोजिंग द जेंडर गैप इन वुमेन्स एंटरप्रेन्योरशिप एंड फाइनेंशियल इंक्लूजन एक बहुत चैलेंजिंग गोल है, क्योंकि जो इसके रूट कॉजेज हैं वो दे रेस्ट ऑन आवर सोशल नॉर्म्स एंड पावरफुल कल्चरल एंड सोशल नॉर्म्स. सो अगर हम डिमांड साइड पे देखें तो वी सी के जो हमारे सोशल नॉर्म्स हैं, women don't have access to resources, access to even mobile phones, limited mobility होती है, उनके पास collateral नहीं होता, so it's very difficult for them to access loans. But on the supply side, we also see कि ख़वातीन को एक viable business segment कम समझा जाता है. बैंक में भी अगर हम देखें तो women focused product designs कम मिलते हैं, उनकी marketing campaigns पे women पे focus कम होता है, या फिर एक स्पेसिफिक सेगमेंट को देख रहे होते हैं जैसे हाउस वाइफ है, या वी वर नॉट लुकिंग एट डिफरेंट सेगमेंट्स ऑफ द प्रोडक्ट्स. सिमिलरली वुमेन की जो फैसिलिटेशन होती है एट द ब्रांच लेवल, that also needs improvement, and sometimes women feel like they're not considered as a valuable customer as soon as they walk in, and sometimes they're made to feel like उनके साथ कोई मर्द का साथ आना जरूरी था. तो ये सब इश्यू सप्लाई साइड पर भी है, और उसके अलावा हमारे पास डेटा कलेक्शन में भी बहुत से गैप्स हैं, और जेंडर पे डेटा बहुत कम दिखता है. दैट इज व्हाई women represent only 12% of the bank's workforce, and जो SME में फाइनेंसिंग का शेयर है वो सिर्फ 9% है. तो अल्टीमेटली चैलेंज वो सोसाइटल माइंडसेट का है जो रिकग्नाइज नहीं करता women की वैल्यू को, women as customers, women as branchless banking agents, women as bank employees. तो अल्टीमेटली ये थिंकिंग हमारी इंफ्रास्ट्रक्चर्स, हमारी ऑपरेशंस, हमारे गवर्नेंस और इंस्टीट्यूशंस में आ जाती है, एक नेगेटिव फीडबैक लूप बन जाता है. तो स्टेट बैंक ने ये रियलाइज किया और ये रिकग्नाइज किया कि अगर हमारी प्रैक्टिसेस जेंडर न्यूट्रल रहेंगी, हमारी पॉलिसीज और हमारी अप्रोचेस जेंडर न्यूट्रल रहेंगी, तो जेंडर गैप इन एक्सेस टू फाइनेंस बढ़ता रहेगा. बिकॉज ये एक बहुत नॉर्मल फिनोमेना है, पूरी दुनिया में भी यही ट्रेंड दिखता है. तो इस वजह से वी डिसाइडेड कि जेंडर इंटेंशनल अप्रोच की जरूरत है, एंड दैट इज व्हाई द बैंकिंग ऑन इक्वालिटी पॉलिसी वाज लॉन्च्ड. द पॉलिसी हैज 5 पिलर्स. का जो पहला पिलर है वो फोकस कर रहा है कि ख़वातीन की शमूलियत इन द बैंक स्टाफ. दैट इज वेयर वी नीड टू स्टार्ट फर्स्ट. कि अगर बैंक में और ख़वातीन होंगी तो एक डिफरेंट तरीके से एक नज़रिया आएगा उनकी टीम के अंदर भी, और वो भी देख सकेंगे कि वुमेन के लिए कौन सी वायबल सेगमेंट्स बन सकते हैं, और सिमिलरली एक अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट होगी. So first of all, we gave the target to the banks to improve their ratio of women in the workforce. So the policy launched with it, so 13.2% of the the staff in banks comprised of women. हमने उनको टारगेट दिया है कि 2024 तक वो उसको 20% पर लेके जाएं. आई एम हैप्पी टू शेयर कि एक साल में ये 14.2% पर आ गया है, एंड गोइंग फॉरवर्ड हम इसको और भी बेहतरी लाएंगे. उसके अलावा और सब बैंक्स को कहा गया कि उसमें ख़वातीन बोर्ड मेंबर्स हों,
और एक डेडिकेटेड डिपार्टमेंट बने जो जिसका काम ही ये हो कि खवातीन के लिए प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज डिजाइन किए जाएं और जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज हैं उनके ऊपर एक जेंडर लेंस अप्लाई किया जाए जिसकी कि क्या वो इक्वली इफेक्टिव हैं फॉर वुमेन एज दे आर फॉर मेन। इसके अलावा इसमें हमने फैसिलिटेशन अप्रोचेस जो खवातीन के लिए बैंक इख्तियार करता है उसमें इम्प्रूवमेंट लाने की कोशिश की है और हर बैंक ब्रांच में हमने बैंक को कहा है कि वो एक वुमेन चैंपियन तैनात करे। जो वुमेन चैंपियन जेंडर सेंसिटिविटी ट्रेनिंग से गुजर चुका हो, वो मर्द भी हो सकता है, औरत भी हो सकती है, ट्रांस भी हो सकता है, इट डजंट मैटर। मकसद क्या है कि as soon as a woman walks into a branch, she should get the feeling that she is a valued and dignified, valuable customer of the bank. She will be treated with dignity and respect. जहाँ पे उसको हैंड होल्डिंग की जरूरत होगी उसको वो भी मिलेगी। एंड आई एम हैप्पी टू शेयर दैट 1 साल हो गया है पॉलिसी की इम्प्लीमेंटेशन हो और 38% ब्रांचेस पे ऑलरेडी चैंपियंस तैनात हो गए। गोइंग फॉरवर्ड हमने अपनी डेटा कलेक्शन को भी और वाइडन किया है, उसका स्कोप और उसकी फ्रीक्वेंसी भी इम्प्रूव की है एंड नाउ वी आर गोइंग टू हैव मच मोर डेटा on how the financial industry is serving men and women. And finally, we applied one pillar on ourselves under the Policy Forum on Gender and Finance. ये एक high level policy forum establish किया गया है under the chairmanship of Governor State Bank of Pakistan, जिसमें ना सिर्फ स्टेट बैंक बट स्टेट बैंक के अलावा जितने स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें एकेडेमिया है, UN Women, chambers of commerce, entrepreneurs, a lot of different stakeholders are a part of this, so that going forward, if there are any more bottlenecks in women's financial inclusion, जिस पे स्टेट बैंक को नजरसानी करने की जरूरत है, उस पर भी काम होगा। Thank you, Faika. It's very encouraging for us to hear that it's just been a year and there are some statistics that you've shared which are significant in terms of, women's financial inclusion. I'll be coming back to you. I'll move on to Hasna. Now, Hasna is associated with the manufacturing sector, as we like to see it, a woman doing a man's business, so to speak. So, Hasna, to begin with, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि how did you venture into this specific field? How has your journey been so far? What challenges have you faced and how you have been able to overcome these challenges? Reason being that we look at you as an upcoming young dynamic woman entrepreneur who is here to inspire not just us participants on who have joined us today, but otherwise as women entrepreneurs in Pakistan. Over to you, Hasna. Ji, Assalamu alaikum. First of all, thank you for inviting all of us to participate. And it's a pleasure to have the opportunity to hear from these inspiring panelists. As far as my own experience is concerned in the manufacturing sector, it is quite male dominated. However, I think there's a lot of space for women to enter into this field. There are obstacles as well, but generally, if we talk about women in manufacturing, there are many, many women in the textile industry who are part of the labor force of manufacturing, which is one of your largest export industries for this country, along with the Salport sporting industry, which is they're my main customers. So they have also shifted towards hiring more women for their labor force. This is part of the requirement of international brands. So there's come a push from the customers to hire more women. And there's also now these large-scale manufacturers are seeing the benefits of hiring women as well as seeing them as dedicated members of the workforce. I think the obstacles can be removed. For example, if we look at what prevents a lot of women from entering the manufacturing sector, such as transportation, safety at work. So a lot of different organizations have arranged for this, that they will have specific transportation for women, where they can be picked and dropped. So they're ensuring the security of women, very strict anti-harassment work policies, and giving safety to women in the workplace. Apart from that, generally to enter the manufacturing sector for women, or any other business in Pakistan, I think there are a couple of levels of things that need to be addressed. For example,
just starting a business or registering a business under the Companies Act in Pakistan, there are quite a few discriminatory provisions in there. And it's been ratified by the previous government, but once the ratification is over, every new government brings new policies. And many policies are left to bite the dust with each and every new government. So we need to stop having new policies for each new government, because as we know, government changes very frequently in Pakistan. So I think making registration of business easier for women, giving them the facility of transportation and safety, and access to capital is a serious issue, which I believe, like Abhi Faikanabi mentioned here, that State Bank is working on it, and different banks are also working on it. Trainings, financial literacy, grants, and as far as investing in women's businesses is concerned, I think investors are only concerned with one thing, and that is return on their investment. If you know you're going to get a return on your investment, you don't care if you're talking to a woman or a man, if you're a serious business person. In that respect, we need to equip women with the tools to be competent leaders, which I believe they already possess those skills. They just need to be honed, and they need to have access to those trainings, to those mentorship programs, whereby they can then, give promising business plans and attract more angel investors and more financing for their businesses. You very rightly mentioned that policy consistency is something that the government needs to focus on, so that we can remove the barriers for new firms to start up in the country. What do you think that the government can do in terms of the incentives that it can put in place to attract local and international investors to Pakistan? We see a robust, tech-based entrepreneurship ecosystem gaining traction as we move along. But how can the government, sort of bring in the right kind of incentives put in place? Let's not talk about subsidies, but what kind of an environment do you foresee moving forward that the government can put in place to support, new enterprises being created and coming into manufacturing sector? I mean, the simple answer is yes, you incentivize investors through tax breaks, right? Which would allow people to invest more, and also incentivize not just investors, the private sectors themselves. Like we have World Bank and Asian Development Bank coming in and saying, well, if you hire X amount of women in your labor force or X amount of women in your office force, we will give you these sort of benefits. I think that's the job of our government, frankly. They should be spearheading this. And apart from that, labor laws, generally having legislation that protects women in the private sector as well. For example, and I'll talk to you even beyond just government, what can the private sector do? I think what we have to be mindful of is that we cannot divorce our societal and cultural restraints from the whole ecosystem of women's entrepreneurship. It's very real. It exists. We cannot ignore it. Just in crude economic terms, how are you going to compensate for the cost of reproduction of a member of your labor force? So women, it's a reality. Women have to bear children. The responsibility of bearing children falls majority on, mostly on women predominantly. So how is you as a woman going to be as hireable as a male who does not have those apparently perceived responsibilities? Well, if we look at, for example, Vietnam work labor force participation of women is 79%. And they have just increased maternity leave to 6 months. So they have legislation and laws in place that are encouraging the labor force participation. I mean, they're at 79, Bangladesh is at 38, and we're at a dismal 21. And most women, and yes, there's a 3-month paternity leave, maternity leave, but is it implemented? I mean, we're a heavily legislated country, but when it comes to implementation of these laws, it's just not there. Even the private sector, they're not held accountable. So I think there needs to be accountability. You need to talk about maternity leave, paid leave, daycare, transport, flexible working hours. So how will you level the playing field for those reproductive years for women? I think there needs to be sound policy on that. Many countries have made a lot of progress on that, and we can, look at their experience and maybe not take a blueprint, because Pakistan's case is unique, but we can head in that direction.
I think you've made some very pertinent points, and I think as Smita moves on in developing the first entrepreneurship policy for women, these are some very important focus areas in which we would look at reviewing the existing legislature, as well as you mentioned, while the legislation might be there, implementation, and rightly mentioned that it's not just the public sector, but the private sector has to also be held accountable for the legislation has been put in place, but what is the implementation? How has the private sector been able to implement it across their organizations? I'll move on to the agriculture sector. So we had Hasna who was talking about her experience from the manufacturing sector. We have another bright young entrepreneur, Fatima Zaka, from the agriculture sector. So now we've heard of, agriculture farm workers being women, but farms being managed and run by women is something relatively new that we came up across. And Fatima, over to you. How has your journey been so far, and why choose this particular field? Ji, first of all, Assalamu alaikum everyone, and thank you very much for having me on the panel. It's been a great morning so far, learning from very different perspectives, young, from different age groups, women leading different sectors. It's been great. So yeah, agriculture. If you look at agriculture, the workforce. Both now I've been looking at the comments. Now I'll switch to Urdu. I'll try my best to speak in Urdu as much as possible, so that most people can benefit from it. Yeah. Very so candid. yeah, of course. So this is how the entrepreneur should be, very candid. So yeah, if you look at the agriculture sector, देखिए 65 to 70% workforce है ही female, but that's the back end. ठीक है, आपके back end में कर रही है labor force. Front end में देखें, जिससे आपने already कहा है, you hardly see any women in the leadership roles, and this is what Farmet is all about. We are 100% female owned and women led agri-business, and it's one of its kind in Pakistan, alhamdulillah. So it's been a 2-year long journey. And how I started, aapne journey ka pucha tha, so I'll be very specific to your questions. So yeah, I started as a farmer myself 4-5 साल पहले. It was just a hobby. Hobby में क्या करती थी, and by the way, in full disclaimer, I'm also not a farm owner. ठीक है, I'm an agri entrepreneur and not a farm owner. So मैंने कहाँ से शुरू किया था, अपने वालिद साहब के फार्म से, छोटे से पैच पे ऑर्गेनिक प्रोड्यूस ग्रो कर रही थी मैं, जस्ट फॉर डोमेस्टिक कंजम्पशन. तो वो हॉबी विद माय फुल टाइम जॉब, this hobby started turning into passion. And then when I deeply got involved in agriculture and farming, I realized and understood a lot of gaps, बहुत सारी problems मुझे समझ आनी शुरू हो गई. मैं तो वो small holding farmers, medium sized farmers, different parts of Pakistan, उनके साथ में उठने बैठने लग गई थी, and I started traveling a lot. So this passion started turning into an entrepreneurial project just by default. So yeah, true entrepreneurship is actually solving big problems, right? So big problems that are benefiting the vast majority of your population. Food and आपकी तो है ही agri-based economy. And देखिए, आपको साफ पानी और ऑक्सीजन के बाद चाहिए खुराक, ठीक है? So this हमारी इसमें पूरी end-to-end supply chain में there are a lot of gaps and issues. So we have started solving a couple of problems. As we grow, inshallah, all problems we will start solving those as well. So yeah, this entrepreneurship का तो मुझे बचपन से ही शौक था. So how I became an entrepreneur, so I'm now coming to that question. मैं काफी अरसे से, काफी सालों से fintechs, edtechs, काफी चीजें मैं explore कर रही थी. I was sitting and interacting with a lot of successful entrepreneurs, not just in Pakistan, across globe also. UK, I studied in UK. वहाँ पे US में किसी के साथ वैसी LinkedIn में chat शुरू कर दी. So I was looking for something that really excites me. So ये hobby मेरे ख्याल से this was just my calling. So hobby से होते होते by default, when I stopped looking for what I want to do, this just happened.
Right. Right, very inspiring, and I think आपने बहुत सी अच्छी बातें की. Agriculture is obviously the mainstay of our economy, और अगर हम देखते हैं कुछ statistics को भी, तो तकरीबन 30% of our horticulture produce is wasted because of gaps in the value chain. So I think focusing on those areas from a government perspective becomes all the more important. लिंकेज क्रिएशन की आपने बात की, फार्म लेवल पे भी, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में भी, whether you're in trade or services, is very important. So is networking and mentoring, young aspiring women entrepreneurs. Giving them exposure to the market itself is also very, significant and extremely important if we want to really promote women's entrepreneurship in the country. I'd be sharing, just to break the conversation a bit, we'd be sharing a very short video clip with you from one of the entrepreneurs we happen to come across from Gilgit Baltistan. Vikas, could we have that up? Ji. अस्सलाम वालेकुम, मैं हुंजा से गिलगित बल्तिस्तान से. हमारा ये है कि डिशावर हैंडीक्राफ्ट्स का हम काम करते हैं ख़वातीन के ऊपर. जो यहाँ सिमड़ा के थ्रू हम आगे हैं, सिमड़ा की जो इदारा है हमारा ख़वातीन के लिए इतना खुश है गिलगित बल्तिस्तान के लोग. अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वरीशा है. मैं फैसलाबाद से आई हूँ और स्मीरा वालों की तरफ से आज मैं लाहौर हूँ. फैसलाबाद में बहुत सी जगह मैंने एग्जीबिशंस लगाई हैं, मेरा स्टॉल्स है और ऑनलाइन काम है. लेकिन अगर स्मीरा वालों की तरफ से मुझे इन्विटेशन था, लाहौर मेरा फर्स्ट स्टॉल है. तो स्मीरा, अपना फुटप्रिंट जो है, ना सिर्फ हम अर्बन एरियाज पे फोकस करते हैं इन टर्म्स ऑफ द काइंड ऑफ सपोर्ट दैट वी प्रोवाइड टू वुमेन एंटरप्रेन्योर्स, पर बल्कि हम फार फ्लंग एरियाज में भी जो खवातीन बिजनेस से मुंसलिक हैं, जिनको कैपेसिटी की जरूरत है, कैपेसिटी बिल्डिंग की जरूरत है, जिनको मार्केट लिंकेज क्रिएट करने की जरूरत है, उनके साथ भी हम मिलके काम करते हैं. इस कॉन्वर्सेशन को आगे लेके चलते हैं. आई विल सर्कल बैक टू यू, मिस फरिया उमर. How do you think we can, women entrepreneurs, the landscape, the ecosystem is huge. We don't even have a definition of women entrepreneurs, but some estimates put the number at about 3.2 million women who are engaged in some kind of entrepreneurial activities. And as pointed out by Fatima, majority of them are actually rural, agri-related women entrepreneurs. Now, against this backdrop, that there's so much of diversity when we come to talk about women entrepreneurs, including those from rural areas and underdeveloped communities, how do we ensure that they have equal access to resources and support? What is the best way to reach out to these women? देखिए, देयर इज नो ब्लूप्रिंट, कोई एक तरीका नहीं है. लेकिन इसमें जो एक चीज हमें मद्देनजर रखने की जरूरत है कि टारगेटिंग कैसे करनी है. आपने उन खवातीन तक जो कि जिनके पास इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है या वो इंटरेस्ट रख रही है, उन तक कैसे पहुंचना है, उन तक रसाई कैसी है, कैसे करनी है. और फिर जिस वक्त मैंने जैसे पहले भी कहा कि खवातीन जो सी हैं वो सब एक होमोजेनस कैटेगरी नहीं है, एक जैसी नहीं होती है. कुछ यंग है, कुछ उम्र की ज्यादा है, कुछ माइनॉरिटी से ताल्लुक रखती हैं, कुछ दूर दराज इलाकों से में रहती हैं, जैसे अभी बल्तिस्तान गिलगित का जिक्र आ रहा था. तो आपको वो एक मिक्स जो है वो मेंटेन करना पड़ेगा. तीसरी बात ये कि जैसे अभी आपने रूरल की भी एंटरप्रेन्योरशिप के बारे में बात की उन्होंने, तो हमें अर्बन और रूरल का देखना पड़ेगा कि क्या मिक्स होगा. और इन खवातीन की जरूरियात मुख्तलिफ होंगी. शायद रूरल में हमें एग्री बेस्ड प्रोडक्ट्स पे उनको ट्रेनिंग देने की जरूरत है, और अर्बन में हम उनकी प्रोडक्ट्स या उनकी जो मार्केट है वो डिमांड जो सी है वो फर्क होंगी. तो हमें वो भी देखने की जरूरत है. फिर इसमें एक चीज और बहुत अहम है कि अगर हम ये कहें कि हम अकेले ही ये काम कर लेंगे तो ये मुमकिन नहीं. स्मीडा ने जैसे बहुत सारे पार्टनर्स को ऑन बोर्ड किया, इसी तरह हमें पार्टनरशिप्स करनी है ऐसी लाइक माइंडेड ऑर्गेनाइजेशंस के साथ जो कि एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोट कर रही हैं, चाहे वो यूएन की हो, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे वो हुकूमत के साथ काम कर रही हो. तो हमें ये देखने की जरूरत है. फिर उसके बाद हमें जो अगला पहलू देखने की जरूरत है वो ये है कि हमें खवातीन को, जब हम प्राइवेट सेक्टर के साथ एंगेजमेंट की बात करते हैं,
तो खवातीन को हमें सिर्फ सप्लाई चेन्स में नहीं देखना, बल्कि उनको कस्टमर्स के तौर पे भी देखना है। तो मतलब जब एंटरप्रेन्योर्स जो हैं उनके मुख्तलिफ हैट्स पहनती हैं, कभी वो बायर होती हैं, कभी वो सेलर होती है, तो वो हमें वो भी एंगल देखने की जरूरत है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो बहुत सारी सर्विसेज क्रिएट करता है, जॉब क्रिएट करता है, सेल्फ डेवलपमेंट, कॉन्फिडेंस और अल्टीमेटली इकोनॉमिक डेवलपमेंट की तरफ ले जाता है। अगर मैं यूएन विमेन का एक्सपीरियंस देखूं तो हम दूर दराज ऐसे इलाकों में काम कर रहे हैं जहां पे बहुत ज्यादा इंडिकेटर्स जो उनसे सोशो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स अच्छे नहीं है, और वहां पर हम ऐसी खवातीन जो कि किसी भी वजह से पीछे रह गई हैं उनको शामिल करने की कोशिश कर रहे हैं। और हमारा जो टारगेट है वो खवातीन जो घरेलू सतह पे बैठ के छोटे मोटे कारोबार कर रही हैं, और हम इस वक्त उनको माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स कह रहे हैं। और ये एक बहुत ज्यादा तादाद है अगर देखी जाए, जो कि इस वक्त इकोनॉमिकली एक्टिव है, और अगर उनको हम इकोनॉमिक ग्रोथ में शामिल कर ले तो ये एक बहुत ज्यादा हिस्सा होगा जो कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट को बूस्ट कर सकेगा। हमें ये भी देखने की जरूरत है कि जिस वक्त हम इन इलाकों में जाते हैं तो वहां पे जो लोकल गेट कीपर्स है, और वो कौन है, आदमी, पॉलिटिकल लीडर्स या इन्फ्लुएंशियल्स या ओपिनियन मेकर्स, तो हमें उनके साथ भी एक राव रस्म बातचीत करने की जरूरत होती है कि इससे पहले कि हम इन औरतों तक रसाई कर सके। तो जैसे मुझसे पहले एक स्पीकर ने कहा कि बहुत सारे इश्यूज हैं जिनको टैकल करने की जरूरत है, और जब हमें विमेन एंटरप्रेन्योर्स तक पहुंचना है तो हमें सिस्टमैटिकली इन तमाम ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करना है, और इन ऑब्स्टिकल्स को रिमूव करने के बाद उनको ऐसा एनवायरनमेंट देना है जिसमें वो सेफ भी महसूस करें, जिसमें वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा इकोनॉमिक गेन्स भी कर सके। तो मेरे ख्याल से ये एक मिक्सचर था जो कि मैं आपकी तरफ मैंने प्रेजेंट किया है, एंड आई एम ओपन टू क्वेश्चंस। थैंक यू। थैंक यू परिया फॉर शेयरिंग दैट। आपने सही कहा कि दूर दराज के इलाकों के लिए एंड अदरवाइज भी हमें टारगेटिंग करने की जरूरत है, और जो कोई इंटरवेंशंस या असिस्टेंस प्रोग्राम्स हम डेवलप करें ओवर टाइम फॉर विमेन एंटरप्रेन्योरशिप वो वेरी करेंगे अक्रॉस द एंटायर इकोसिस्टम के। जब हम माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रहे हैं वहां पे एक डिफरेंट टाइप की इंटरवेंशन की जरूरत होगी, जबकि हम मीडियम साइज की अगर बात करेंगे वुमेन लेड बिजनेसेस that have been in operations for several years, वहां पे एक डिफरेंट टाइप की सपोर्ट की जरूरत होगी। मेरा अगला सवाल मिस मासूमा सिप्तैन एंड देन हसना एंड फातिमा, if you could also weigh in on this, is when we look at the if we talk about improving the entrepreneurship ecosystem, so at the early stage of a startup, what kind of hands-on support do you foresee needs to be provided for these women to be able to start their business and then grow over time? So Masuma, I'll pose this question to you first, and then Hasna and Fatima can also weigh in. जी, this is very important thing. लेकिन इससे पहले if you allow me, जो आपने पिछला एक सवाल पूछा था मैडम प्रिया से, क्या मैं उसी में थोड़ा सा और ऐड कर सकती हूँ? जरूर जरूर जी, क्योंकि मतलब थोड़ा सा मुझे आप सबको पता है कि मुझे थोड़ा सा मौका मिला because of कि मैं फेडरेशन में थी and that has offices in all over Pakistan. So I was able to be connected with the women in all over Pakistan. और हमने एक पॉलिसी डॉक्यूमेंट जो डेवलप किया जिसमें ना सिर्फ हमने गैप्स देखे बल्कि हमने उसमें इसके सॉल्यूशंस की भी बात की। तो यहाँ बहुत सारे लोग हम गैप्स की बात कर रहे हैं, और अब आपकी एसएमई पॉलिसी भी यहाँ पर है, बट अगर हम इतने सालों में उसका ग्राफ देखें कि इन टर्म ऑफ वुमेन इंक्लूजन हमने कितना सक्सीड किया, तो इट्स वेरी लेस और बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो इसमें हम उस टाइम पे भी वी फ्रॉम एफपीसीसीआई वुमेन्स चेंबर and I was leading that initiative, we raised our voice and we requested that if we have a definite a specific definition for women entrepreneur, because a specific definition means specific rights, then you can map them. उसके फ्रेमवर्क पे हम बात कर सकते हैं, क्योंकि जब हम सिर्फ पॉलिसीज की बात करते हैं, फ्रेमवर्क की बात करते हैं, बट देयर इज नो मैपिंग,
बट जो एक डेफिनेशन होती है वो आपके, अब आपने देखे इतने सारे हमने ऑब्स्टिकल्स की बात की है, इतने सारे प्रॉब्लम्स की बात की है, लेकिन माय फोकस इज वी शुड वर्क ऑन सॉल्यूशन. सो आई वुड रिक्वेस्ट यू ऑल के जो हमने एक प्रोसेस पिछले साल 2 साल पहले शुरू किया था, एंड वी रियली रेज्ड आवर वॉइस through FPCCI that there should be a separate definition for VE so that they can be given rights everywhere. जब आप समिधा की बात करें, TDAP की बात करें, वर्क प्लेस की बात करें, आप एग्रीकल्चर की बात कर रहे हैं, जब आप एक सेपरेट डेफिनेशन में आ जाएंगे तो आपके सबके राइट्स रिजर्व होंगे. और जितने इंस्टीट्यूशंस हैं, रिगार्डलेस स्मॉल टू मीडियम टू लार्ज एंटरप्राइज, उन सबके सबको ये एक मजबूरी बन जाएगी. दे हैव टू सेफगार्ड देयर राइट्स. So my request is let's all start working on separate definition for women entrepreneurs. So that I hope कि इसके ऊपर अब समीदा प्रॉपर काम शुरू करेगा, and we all here with your support. और दूसरा जो आपने मुझसे सवाल किया, that is for the startup and the ecosystem. देखें, इस वक्त जो पाकिस्तान है, we are 5th largest populated country, जिसकी 50% are women. और इतनी बड़ी आबादी को our government cannot support. So it's very important thing that we should have a synergized movement. TDAP, SAMIDA, trade policy, UN women, और जितने भी बहुत सारे ये आपके consulates काम कर रहे हैं, different projects पे काम कर रहे हैं, they need to sit together and focus on a synergized policy and synergized things. क्योंकि वहाँ पे इनको फाइनेंसिंग भी चाहिए, इनको इंटरनेशनल मार्केट आउटरीच भी चाहिए, उसके लिए इनको ट्रेनिंग्स भी चाहिए, और देयर शुड बी स्पेसिफिक मार्केट रेडीनेस प्रोग्राम्स. आप सिर्फ स्टार्टअप्स की बात ना करें, इट्स फॉर ऑल. कि हम जब कोई ट्रेनिंग कुछ भी डिजाइन करते हैं ना, जब वो एक दिन की होती है ना, तो दैट इज जस्ट एन इवेंट. लेट्स ऑल प्लान सम डिजाइन, सम एक्टिविटी विद जिसमें हमारा साथ हमारा ये एजेंडा कि जब तक हम ये चीज अचीव नहीं करेंगे, वी विल बी स्टिक टुगेदर. लाइक एग्जांपल हमने बात की थी अभी स्टेट बैंक की. स्टेट बैंक हैज डिफरेंट पॉलिसीज. मैं बहुत क्लोज काम करती रही हूँ इनके ट्रेड पॉलिसी फ्रेम उसके ऊपर, इनकी क्रेडिट गारंटी स्कीम के ऊपर. इतनी आला स्कीम है जिसमें मतलब 5% पे लोन है, 60% रिकवरी स्टेट बैंक की है, कोलेट्रल है, नो कोलेट्रल, और इस तरह से. लेकिन वी वर नॉट एबल टू अचीव आवर टाइमलाइन. हम उस तरह से अचीव क्यों नहीं कर सके? इसलिए कि हम लोगों ने उसको, जब तक हम खवातीन की हैंड होल्डिंग करके, और हमने जब तक एक एक लोन उनको करा नहीं दिया, हमने उनका हाथ नहीं पकड़ा. तो मेरी रिक्वेस्ट उस टाइम, सिर्फ एक एग्जांपल लेके मैं ये बात कर रही हूँ, कि मेरी रिक्वेस्ट इस टाइम स्टेट बैंक से होगी कि हम इंगेज करें चैम्बर्स को, एसोसिएशंस को, क्योंकि उनके पास एक बहुत बड़ा डाटा होता है खवातीन का, जिनके डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट होते हैं. बिकॉज फॉर द बैंक्स यू नीड अ कंप्लीट डॉक्यूमेंटेड फाइल. और इसी तरह से हम एक प्रॉपर एक्टिविटी बनाए, एक मार्केट रेडीनेस प्रोग्राम बनाए, और जिसमें हमारा एजेंडा क्या हो कि बाय द एंड ऑफ दिस प्रोग्राम वी विल बी एबल टू, वी कैन से कि लोन्स हम इतने फिगर्स में करवाएंगे कि इतनी खवातीन को हम करा लेंगे. Until that time we should be working together. और उसमें फ्लेक्सिबल बनाए हम अपने प्रोग्राम्स को, कि उसमें होता ये है कि हम एक तरीके से एक चीज डिजाइन शुरू करते हैं. पाकिस्तान में इतना डाइवर्स हालात हैं. अभी आप लोग इस टाइम जो आपका 20% जो आपका मार्कअप रेट आया हुआ है, हम यहाँ इतनी सब कुछ चीजों की बात कर रहे हैं, बट मुझे पता है कि मेरी फैक्ट्री में मेरे लिए काम करना कितना मुश्किल हो गया है. मैं वो ऑर्डर्स, वो चीजें मीट ही नहीं कर सकती. मेरे पास इतनी बड़ी आर्टिसंस की फोर्स है, वो बेचारे उन वेजेस के ऊपर अपना घर अब नहीं चला सकते. लेकिन दूसरी तरफ मार्केट का इतना बुरा हाल है कि मैं वो बिजनेस अपना चला ही नहीं सकती हूँ. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वट एवर वी आर प्लानिंग और डूइंग, इट शुड हैव अ मैपिंग. जी, थैंक यू जी, थैंक यू मासूमा. जस्ट टू शेयर विथ यू, जैसा मैंने पहले भी एट द बिगिनिंग I shared that SMIDA is launching with the collaboration technical assistance of the Asian Development Bank a women inclusive finance program, and we are looking at developing a women's entrepreneurship development policy. And the policy का मकसद ही ये है कि पूरे women entrepreneurship ecosystem को मैप करके जो इदारे इसमें सपोर्ट रोल में है उनको आइडेंटिफाई किया जाए, उनके साथ मिलके एक प्रोग्राम डिजाइन किया जाए, एक एक्शन प्लान डेवलप किया जाए which will have its targets, and those targets will then be monitored as we move along. This is a Government of Pakistan policy. It's going to be the first of its kind. We will be working with the private sector, with different stakeholders from the public sector, State Bank, SECP,
रजिस्ट्रेशन की जहाँ बात आती है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट का बहुत अहम रोल है वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप में एंड रजिस्ट्रेशन ऑफ बिजनेसेस में, जिस तरह के हसना ने इनिशियली अपने कमेंट में भी कहा कि रजिस्टरिंग अ बिजनेस बिकम्स अ प्रॉब्लम फॉर women don't have access to information, they don't really know where to go. So उस किस्म के सपोर्ट मैकेनिज्म के ऊपर भी हमारा फोकस होगा. Hasna, would you like to weigh in on terms of, we understand that there are different support structures required across the entire, life cycle of a business. But if we look at early stage startups, and given the fact that we have a huge youth cohort and we would like to focus on adoption of technology in businesses, and women-led businesses in the tech are coming up, what kind of support do you foresee would, sort of catalyze this growth of this particular segment or women-led businesses at the early stage? जी बिल्कुल. मेरा ख्याल है कि बहुत अभी जिस तरह आपने कहा कि टेक के अंदर इंटरेस्ट बहुत है और स्कोप बहुत है, बिकॉज आपने देखा होगा कि इंडिया ने आईटी और सॉफ्टवेयर में बहुत तरक्की की और हम बहुत पीछे रह गए. उसके अंदर ये है कि हमने जो कंप्यूटर लैंग्वेज कोडिंग वगैरह के कोर्सेज, उसकी एक लैंग्वेज और टेक्नोलॉजी की यूजुअली मेल डोमिनेटेड मुकर्रर रखे हैं ये फील्ड्स, कि इसके अंदर यूजुअली मर्द हजरात ज्यादा होते हैं. मगर हमने कैसे औरतों को भी इसके अंदर लेके आना है. अब कराची की भी कुछ कंपनीज हैं और ये पंजाब में भी कुछ ऐसी हैं कि आफ्टर ग्रेजुएशन, मतलब यानी कि मैट्रिक करके और अपना अंडरग्रेड खत्म करके लोगों को सिर्फ 1-2 साल के या बूट कैंप्स बनाए जा रहे हैं डिजिटल लिटरेसी के, कि जी 600 से 900 घंटों में आपको अपनी कोडिंग और प्रोग्रामिंग का पूरा लाइसेंस और सर्टिफिकेट मिल जाएगा और आप उसके बेसिस पे डॉलर्स में अर्न कर सकते हैं आउटसाइड. कुछ कंपनीज हैं जो ये काम शुरू कर रही हैं, जैसे ओपन एल्गोरिदम है एक कंपनी कराची में, नॉलेज स्ट्रीम्स है एक नई इंस्टीट्यूट खुली है पंजाब में. तो ये इन्फॉर्मेशन मैं शेयर भी कर लूंगी लोगों के साथ जो इंटरेस्टेड है. बट हमारे पास अगर एक ऐसा प्लेटफॉर्म हो जहाँ पे हम जितने भी स्टार्टअप के लिए, फॉर एग्जांपल टेक सपोर्ट में अगर किसी औरत ने जाना है तो उसको एक ही प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट एवेन्यूज को वो ढूंढ सके. सो इफ वी कुड हैव लाइक मे बी वन वेब पेज और वन वेबसाइट वेयर यू मेक all these portals accessible to women based on this is tech, this is software, this is manufacturing, और ये programs available. तो I think एक one stop shop होनी चाहिए to begin with, जहाँ पे आप अपने different avenues को access कर सकें. और जहाँ तक बात है कि कोई भी स्टार्टअप हो, अब आउटसाइड ऑफ टेक अगर कोई भी हो, तो उसके अंदर नंबर 1 तो ये था कि एक्सेस टू फंडिंग, यानी कि जो आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट और पैसे चाहिए अपनी बिजनेस में इन्वेस्ट करने के लिए, वो आपके लिए एक्सेसिबल हो विदाउट अ मेल या विदाउट गिविंग डिटेल्स ऑफ योर हस्बैंड. यूजुअली क्या होता है, आप जाते हैं, आपने पूरे जो फॉर्म फिल करने होते हैं उसके अंदर आप अपने हस्बैंड, फादर, ये वो सारों की डॉक्यूमेंटेशन पेश करनी होती है और आपके पास, जैसे पहले फाइका ने भी मेंशन किया, कि कोलैटरल नहीं होता. उसके बाद ये कि अगर आप स्टार्टअप में आप आई थिंक स्मीरा ये ऑफर भी करता है मेंटरशिप और नेटवर्किंग. मेरा ख्याल है एक बहुत फर्क पड़ता है दूसरी औरतों को देख के, उनसे बात करके, उनके एक्सपीरियंस सुन के और ये देख के कि अच्छा पॉसिबल है. इस खवातीन के 3 बच्चे हैं, इतना बड़ा सेटअप है और वो फिर भी काम कर रही, क्योंकि कुछ सेल्फ लिमिटिंग बिलीव्स भी होते हैं और कुछ सोसाइटी के भी होते हैं. और फिर जिस तरह मैडम मासूमा ने मेंशन किया कि जी मर्द हजरात भी जो सपोर्टिव हैं, उनके बगैर ये सोसाइटी इकट्ठे चल ही नहीं सकती विदाउट मेल सपोर्ट. तो आई थिंक जो मेल एलाइज हैं उनको भी हाईलाइट करना, उनकी भी मेंटरशिप और नेटवर्किंग फीमेल एंटरप्रेन्योर्स के साथ कराना बहुत जरूरी है. दूसरा ऑब्वियसली ट्रेनिंग एंड एजुकेशन, फाइनेंशियल लिटरेसी के हवाले से, कि जी बैलेंस शीट किस तरह पढ़ते हैं, आपने अपनी कंपनी के फाइनेंसेस किस तरह, बेसिक चीजें जो शायद हम लोग अंडरग्रेड यूनिवर्सिटी में स्किप हो जाती हैं, या आपने कोई और कोर्सेज लिए हो, आपने उन पे फोकस ना किया और बाद में आप किसी बिजनेस में जा रहे हो. फॉर एग्जांपल मैंने पढ़ी इंटरनेशनल डेवलपमेंट है, मैंने पीएचडी सोशियो कल्चर जियोग्राफी में इनिशिएट किया अपना. हाउएवर बिकॉज ऑफ टर्न ऑफ इवेंट्स इन माय लाइफ I ended up in manufacturing. तो I had to reteach myself कि जी बैलेंस शीट किस तरह पढ़ते हैं, कंपनी के अकाउंट्स किस तरह करते हैं. और ये चीजें मैंने पढ़ी भी नहीं थी, मैंने किसी और फील्ड में पढ़ाई की हुई थी. तो उसके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी के टूल्स या तो आप अपने आप को खुद सिखाते हो या कोई आपको आपके नेटवर्क में कोई हो तो करा दे. तो आई थिंक दैट नीड्स टू बी ऑन अ फॉर्मल प्लेटफॉर्म.
और दूसरा बाकी तो आई थिंक बेसिक चीजें सच एज एक्सेस टू रिसोर्सेज और हमने सपोर्टिव पॉलिसीज पे तो काफी बात कर ली है, बट आई थिंक स्टार्टअप फेज में ये सपोर्ट बहुत जरूरी होता है. I think आपने बड़ा अच्छा point out किया है in terms of a one-stop shop, maybe just a web page which links up all these portals के registration कहाँ पे करानी है. अगर आप पार्टनरशिप रजिस्टर कर रहे हैं तो वहां पे प्रोविंशियल गवर्नमेंट का रोल होता है. अगर आप कंपनी कॉर्पोरेट एंटिटी के कॉन्टेक्स्ट में जा रहे हैं वहां पे SECB का रोल होता है. तो इस किस्म की इंफॉर्मेशन एंड देन ऑल द सपोर्ट स्ट्रक्चर्स दैट आर अवेलेबल दैट आर करंटली बीइंग ऑफर्ड बाय द गवर्नमेंट, वेदर इट इज द banking on equality policy of the state bank, the credit guarantee that they're running for women entrepreneurs. इस किस्म की इंफॉर्मेशन हर दफा हमारा इंटरेक्शन जो women entrepreneurs और प्राइवेट सेक्टर से होता है, हमें यही पता चलता है कि लोगों के इतना कुछ हो भी रहा है yet that connect isn't there, पता भी नहीं है लोगों को. I think access to information fundamentally is one of the biggest challenges that we need to overcome when we're talking about promoting women entrepreneurship in the country. किससे कांटेक्ट करना है आपने, किस व्हाट इज द रेलेवेंट एजेंसी, कौन है रेलेवेंट पर्सन आपके प्रोविंस में, क्या मैंने अगर किसी से एडवाइस लेना है तो क्या मैं लेट्स से मैं मैडम मासूमा को कांटेक्ट कर सकती हूँ, will I have her contact information कि मैं उनको ईमेल कर लूं just off a website as a young woman कि जी मेरा ये आइडिया है, मेरा ये प्लान है, can you guide me, can I इस तरह के. और ये इंटरनेशनली इस तरह के बहुत प्रोग्राम्स होते हैं जहाँ पे कॉफी मीटिंग सेटअप होती है नेटवर्किंग पॉइंट ऑफ व्यू से, दैट यू कैन जस्ट इंटरेक्ट विद वुमेन जो कर चुकी हैं या जो कर रही हैं और आप उनसे सीख सकें, और आपको सारी इंफॉर्मेशन एक जगह पे अगर मिल जाए तो आसानी हो जाएगी. Just to share with you, आपने one stop shop की बात भी की, and then I think mentoring is very important. It is always inspiring for all of us to hear from women who inspire us, and I think mentoring it plays a very important role here. और हमारे यहाँ भी एक relatively people are not well aware of the mentors that might exist or are unable to connect with successful women who can guide them through their journey of entrepreneurship. So SMEDA, as part of its initiative, is also developing a mentors network specifically focusing on women entrepreneurs. And in fact, we would be requesting all of you to dedicate your time as much as possible. We understand everybody has their own businesses to run, but this is a national service that we will be reaching out to you subsequent to this webinar, not just the panelists, but in fact the participants as well, to contribute and become mentors for our young aspiring women at the universities, those who are housed in our incubation centers, so on and so forth. I believe, Tanya, you wanted to make a comment. I just wanted to add that, Hasna, like you rightly said that, there should be a portal. We're actually working on it. And we're gathering the information and we're trying to put something together for the women. But we take pride at SMEDA that wherever we have the women's seminars or the awareness sessions or anything, हर वक्त हम यही, I'm going to be bilingual over here because there have been requests to go in Urdu as well. So हम इस बात पे काफी honor लेते हैं और pride लेते हैं, हमारे लिए proud moment है because हम SMEDA one stop shop है. And I always say कि for men तो है ही है for SMEs, but खवातीन के लिए बहुत अच्छा platform है because अगर कोई भी female घर से निकलती है and उसको actually नहीं पता कि अब उसने करना क्या है, उसके पास capital है नहीं है, business register किधर करवाना है, उन्हें किधर जाना है, कौन से forms fill करने हैं, loans कौन से available हैं, grants कौन सी available हैं, training sessions हैं, skill development है, and so forth. It's a huge canvas. So खवातीन के लिए तो I always say and profess के हमारे help desk, हमारे offices, हमारे regional offices are a brilliant platform. You don't have to go anywhere. आप आते हैं, हम आपको हर तरह की जितनी हमारी capacity है, जितनी हम help कर सकते हैं हम देते हैं, awareness हम पूरी देते हैं और सारे चीजें यहाँ तक के at times हम forms भी डाउनलोड करके फिल करके दिखा देते हैं कि जी आपको ये डॉक्यूमेंट साथ अटैच करना है. So I just wanted to add this. That's wonderful. That's wonderful. Another point that I just like to add is कि अगर हम सिर्फ इस वक्त मैडम सुमा ने भी मेंशन किया कि मुल्क के हालात ठीक नहीं है, इकोनॉमी नीचे जा रही है, अगर हम
इस चीज को बहुत पुश करें और स्ट्रांगली एडवोकेट करें, एंड डेफिनेटली थ्रू स्मीरा, व्हाट यू सेड इज वंडरफुल, द वर्क स्मीरा इज डूइंग. आई जस्ट विश आई वांटेड टू बी इवन मोर नोन नेशनली कि स्मीरा कितना कुछ कर रहा है, सबको पता होना चाहिए. बट जनरली अगर हम एज अ स्ट्रेटेजिक पॉइंट स्मीरा उस चीज को पुश करे कि आपका जीडीपी बाय 2025 60% बढ़ सकता है, ठीक है, और इस वक्त मुल्क का क्या हाल है, जस्ट बाय गेटिंग कि आप और औरतों को वर्कफोर्स में डालें, क्योंकि आपकी आधी पॉपुलेशन तो घर बैठी हुई है, ठीक है. बांग्लादेश में वो सारी आके काम कर रही हैं. मैं इंटरनेशनली एज एन एक्सपोर्टर कैसे कम्पीट करूं बांग्लादेश और वियतनाम के साथ जब आधे लोग घर बैठे हुए हैं, ठीक है. तो एक ये बहुत बड़ा इशू. दूसरा ये कि गवर्नमेंट को एज अ कॉर्नर स्टोन ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी कि हमने IMF से क्या टॉक्स करनी है, हमने इस इकोनॉमिक डाउनटर्न से किस तरह निकलना है, कॉर्नर स्टोन उस पॉलिसी का ये कि यार हमने औरतों को इसमें किस तरह लाना है, रिगार्डलेस ऑफ सोसाइटी कल्चर, इट्स बिकम अ मैटर ऑफ आवर सर्वाइवल नाउ. आप और देर अपनी आधी वर्कफोर्स को घर बिठाएंगे, आपकी इकोनॉमी नहीं टेक ऑफ करेगी. सो इट्स जस्ट अ वेरी लॉजिकल प्लेन, मतलब नो ब्रेनर दैट इस वक्त ये जरूरी है कि गवर्नमेंट इसे एज अ पॉलिसी पॉइंट उठाए. Right, and you very rightly pointed that out, and that's specifically why I think the policy that we're looking at developing is going to take all these points into consideration, and we intend to make this, a cross-cutting policy with targets where we're looking at taking women, what the current statistics are, what are our targets, and we will try our best to ensure, based on all stakeholders' involvement, to implement the policy at the provincial, at the federal level. Very important, not just to be signatories to these international conventions, but actually see them being practiced on ground as well. I'll just move on to Fatima. I was just wondering, considering that you're a technology business, in the sense that you have a platform through which your clients reach out to you, what kind of a role has it played in your business in accessing the market? Do you think that was the way to go for Formet, or did you try out other models? Ji Fatma. Okay, so you're mute, sorry. We will just unmute. Ji, please go ahead. Yeah. So we are essentially a tech-enabled startup. अब आप उससे पूछ रही हैं कि how it has helped me and it has been helping us as a team. देखें, हमारी जो business है ना हमारा, it's end-to-end supply chain, agri supply chain. उस पे इतने सारे channels आते हैं आपके farm. बाकी तो देखें कोई भी sector हो गया, उस पे बहुत सारे supply chain के channels कट डाउन होते हैं. हमने तो फार्म से लेके एंड कस्टमर तक हर चीज पहुंचानी है. अब मैं आपको बताऊं, टेक्नोलॉजी हैज बीन सच अ ह्यूज ब्लेसिंग इन माय लाइफ, एंड whoever is adopting technology, मैं घर में बैठे बैठे by just downloading few apps on my phone, पूरे फोन पे I manage end-to-end supply chain. मुझे पता होता है कहाँ से कब चीज वो डिस्पैच हुई है, कहाँ है, कस्टमर का सारा कुछ डेटा जल्दी जल्दी ठक 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 सारा कुछ. सो इवन गाड़ी में बैठे बैठे फोन पे सारा कुछ हो रहा होता है, कोऑर्डिनेशन हो रही होती है, अपडेट्स हो रहे होते हैं. सो या इट्स अ वेरी वेरी इंटेंस सप्लाई चेन दैट वी आर डीलिंग इन. और उसपे सारा भाग दौड़ एंड staying at one place, it's not essential if technology is being adopted correctly. So yeah, मेरा जो work life balance is इतना जबरदस्त उससे manage होता है, and then of course traveling भी हो जाती है, and then थोड़ा सा if whenever possible rest भी हो जाता है. घर में बैठे बैठे काफी कुछ, technology is a huge blessing indeed. So technology adoption, not just for your business, which is run through an e-commerce platform, but for integration in other processes of business, whether it's manufacturing and services trade, whatever it may be, is a very useful tool to not just grow your business, but to reach out to the market as well. I think this discussion is going in a very, very interesting manner. I think right now, let's take a pause, and if there are any questions from our participants, kindly raise your hand, and we introduce yourself and we'll come to you.
if you have any question that you'd like to ask our panelists. So please use the raise hand option in the chat box so that we can come to you. You can pose your question, but before you do that, kindly अपने आप को अपना तारुफ करा दीजिए, और फिर अगर आप कोई सवाल हमारे पैनलिस्ट से पूछना चाहते हैं, तो the floor is open. If you could raise your hands. जी, anyone? Assalamu alaikum ji. My name is Malik Samiullah. I'm a cluster head in UBL. और lending point of view से जो प्रॉब्लम आती हैं फीमेल्स को, वो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ। एक्सपीरियंस के कुछ फीमेल्स, क्योंकि उनको पता नहीं होता कि किस तरीके से हमने अप्रोच करना है और क्या क्या रिक्वायरमेंट होती हैं, और वो किसी के हाथों में यूज़ भी हो जाती हैं। लाइक के शायद मैं किसी को पैसे दूंगी तो वो मेरा काम करवा देगा। तो हमारे पास ऐसे केसेस भी आती हैं। तो मेरा एक होता है कि मैं पर्सनली उनसे मिलके एक तो ये बताता हूँ कि आपने किसी को पैसे नहीं देने, अगर आपकी चीज़ें ठीक है तो किसी को पैसे देने की ज़रूरत नहीं है। और उसमें स्टार्टअप में भी, और जो ऑलरेडी काम कर रही हैं ख़वातीन, उनमें ये होता है कि वो अपने अकाउंट्स को यूज़ नहीं करती। यानी कि अब तो बहुत ईजी है, ईजी पैसा है। अपने जो अकाउंट टर्न ओवर हैं थोड़े से, वो अगर मैनेज कर लें, अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड करना शुरू कर दें, तो उनके लिए काम बैंक को एक्सेस करना आसान हो जाता है, और हमारे लिए भी आसानी हो जाती है कि हम उनको फाइनेंस कर दें। स्टार्टअप्स के लिए भी जो स्कीम्स हैं 1 मिलियन तक की बगैर किसी कोलेटरल के, हमने स्टेट बैंक ने की स्कीम्स हैं, जो हमारी है PMYK की स्कीम है नई आई, उसमें भी हमने पैसे दिए हैं विदाउट कोलेटरल, और दे भी रहे हैं अभी भी। लेकिन अगर कोई होमवर्क के बगैर आता है तो उसके लिए वो मसला होता है। अगर कोई काम ऑलरेडी कर रहा है तो हम उसका एक्सपीरियंस, उसकी चीज़ें विजिट करके, अगर वो क्वालिफाई करता है, उसको थोड़ी सी गाइडलाइन दे देते हैं, जिससे उसका काम आसान हो जाता है। लेकिन अगर कोई होमवर्क नहीं करता, कि कई खवातीन ऐसी भी आती हैं कि जिनको कहती हैं कि जी हमें बस पैसे दे दें, हमने ये करना है। जब उससे क्रॉस क्वेश्चंस करते हैं तो फिर वो ब्लैंक होती हैं। उसमें वो होता ये है कि उनके जो भाई हैं या फादर्स हैं, वो उनका नाम लेके तो अपने लिए लेना चाहते हैं, तो ये भी चीजें आती हैं। सॉरी फॉर द इंटरजेक्शन जी, काइंडली अगर आपका कोई सवाल है हमारे पैनलिस्ट से, तो अगर आप वो इसमें ये है कि कोई चाहें। फीमेल्स के लिए इंक्यूबेटर सेंटर्स कोई स्पेशल आपका है प्लान में? जी, ये स्मीडा की तरफ से मैं आपको जवाब दे देती हूँ कि जी स्मीडा ने ये प्रोसेस शुरू किया था आज से कोई 10 साल पहले, जिसमें हमने वुमेन बिजनेस इंक्यूबेशन सेंटर्स एस्टैब्लिश किए थे अक्रॉस द कंट्री। एक पब्लिक सेक्टर डेवलपमेंट प्रोग्राम के तवसत से किए गए थे। अभी करंटली हमारा एक वुमेन बिजनेस डेवलपमेंट सेंटर है जो कि एस्टैब्लिश किया जा रहा है डेरा इस्माइल खान में। सो दैट्स द बिजनेस इंक्यूबेशन सपोर्ट। इसके अलावा गवर्नमेंट के इग्नाइट के थ्रू जो नेशनल इंक्यूबेशन सेंटर्स हैं जो फाइनेंस है, और HEC के थ्रू जो हर यूनिवर्सिटी के अंदर एक रिक्वायरमेंट है इंक्यूबेशन सेंटर्स की, उसको देखा जा रहा है। अगर हम और अगर किसी के पास पैनलिस्ट के तौर पे अगर कोई इफ देयर आर एनी क्वेश्चन जो आप हमारे वर्दी पैनलिस्ट से पूछना चाहते हैं, तो द फ्लोर इज ओपन। आई थिंक मासूमा, आई बिलीव आप कुछ कहना चाह रही हैं। जी मासूमा। मासूमा जी को अनम्यूट, जी मासूमा को अगर अनम्यूट कर दें हम। जी मैं थोड़ा सा रिप्लाई करना चाह रही थी मोहतरम समीउल्लाह साहब को, कि जब हम क्लस्टर्स उसकी बात करें, इस वक्त जो हमारे पास जो सबसे अच्छा जो प्लेइंग फील्ड है फॉर द बैंक्स, और एक अपॉर्चुनिटी है आपको लिए, दैट इज द वुमेन चेम्बर्स। क्योंकि होता क्या है कि जब बैंक्स कहीं जाते हैं तो उन्हें क्या चाहिए होता है, उन्हें उनका एनटीएन चाहिए, उनके बैंक अकाउंट चाहिए, और उनके टैक्स रिटर्न्स चाहिए। एंड दिस इज द रिक्वायरमेंट ऑफ वुमेन चेम्बर्स टू। तो अगर आप सब लोग मिलके आप एक इंक्यूबेशन सेंटर्स उन वुमेन चेम्बर्स के साथ खुद बनाते हैं, लाइक फॉर इंस्टेंस इफ यू आर जॉइनिंग मुल्तान वुमेन चेम्बर फॉर सम इनिशिएटिव, आप यू विल बी गेटिंग 300 वुमेन एंटरप्रेन्योर्स देयर, और जिसमें आपका सक्सेस रेट कहीं ज्यादा होगा। तो इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये है कि हम अपने, और आपको अनफॉर्चुनेटली बताऊं कि इस दफा ब्लू फेयर पे हम हर दफा सारे बैंक्स को बुलाते थे, और इस दफा हमारे पास बैंक्स नहीं आए वहां पे। पूरे पाकिस्तान से there were like 120 different businesses, जिसमें जो entrepreneurs थी, there were like more than 300 entrepreneurs for 3 days were there, but banks lost that opportunity because they were not there.
जी, I think it's very important कि ये networking और इस तरह के fairs में एक exchange of information भी होती है, and it's always very useful to participate from the public sector perspective and also from the private sector perspective. Do we have any other question? अगर नहीं है तो I would like to welcome. Oh, we do have a question, I've been told. Ji, Miss Aisha Rafiq, I believe you have a question. Please, if अगर आप अपना तारुफ करा दीजिए और जिन पैनलिस्ट से आप अपना क्वेश्चन करना चाहती हैं उनकी तरफ डायरेक्ट कर दें अपना क्वेश्चन. Thank you, Aisha. Ji, assalamu alaikum everybody. Thank you so much for giving me chance to ask my questions, and thank you so much, Samida, for arranging that so informative session. So basically, let me introduce myself also. I am founder and CEO of e-learning platform with the name of Skill Vibe, and I'm running that company from last 3 years. I'm Global Entrepreneur Award holder of 2022 and National Entrepreneur Award holder of GSA 2022 also. So basically, my question is, which opportunities are right now available for micro entrepreneurs? Sorry, I couldn't remember the name of speaker that highlighted the micro entrepreneur term. So I have the question from her. So which opportunities right now available for micro entrepreneurs? Can she highlighted that point? And the second question, मेल्स जैसे अभी काफी जिक्र हुआ कि ऐसे एरियाज से हैं जहाँ पाकिस्तान में एक तो फीमेल्स को सपोर्ट ही नहीं किया जाता एंटरप्रेन्योरशिप में. ऐसे एरियाज जो बैकवर्ड हैं, आप पंजाब के कुछ ऐसे एरियाज ले लें, और जैसे केपी की साइड पर कुछ ऐसे एरियाज हैं जहाँ पर ऐसे सपोर्ट सिस्टम नहीं है कि वुमेन एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ फोकस किया जाए. तो कुछ ऐसी वहां पर खवातीन हैं जो घरों में बैठ के काम कर रही हैं, लाइक अपने आप को प्रूव करने की कोशिश कर रही हैं. उनके लिए नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटी सचेज नहीं है कि वो सेमिडा या इस तरह के काफी इंक्यूबेशन सेंटर्स जो हैं वो फिजिकली आके ज्वाइन करें. तो ऐसी सूरत हाल के अंदर नेटवर्किंग जो बहुत इंपॉर्टेंट है एंटरप्रेन्योरशिप में, बिजनेस के लिए, ऑनलाइन क्या ऐसा कोई प्लेटफॉर्म अवेलेबल है जहां पर वो एक दूसरे से, एक तो नेटवर्किंग अपॉर्चुनिटीज लाइक ऑनलाइन अवेलेबिलिटी है या नहीं, इसको जरा काइंडली हाईलाइट कर देंगे तो आई विल बी वेरी थैंकफुल टू यू. Ji, Faria, would you, based on your experience, Faria, would you like to weigh in on her question regarding micro entrepreneurs? अगर कोई और पैनलिस्ट तो एंटरप्रेन्योर्स के लिए देखें, जब आप उनको एक्सेस करते हैं तो उनकी नीड्स बहुत डिफरेंट होती हैं. सो उनके लिए एक तो हैंड होल्डिंग का प्रोसेस जो है वो बहुत लंबा होता है, ताकि वो और सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये होती है कि उनकी जो प्रोडक्ट्स हैं वो मार्केट डिमांड को केटर कर सकें, और उनकी क्वालिटी जो होती है वो जो कि मार्केट फौरन उसको बाय इन कर ले. तो उसके लिए उन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक हम लोगों ने, जो हमारा एक्सपीरियंस है, हमने उनके लिए डिजिटल लिटरेसी, एंटरप्राइज डेवलपमेंट का पैकेज और थोड़ी सी सपोर्ट इन टर्म्स ऑफ ऑर्गेनाइजिंग देम इनटू कॉमन इंटरेस्ट ग्रुप्स सो दैट they can learn from each other and they gain confidence. और मैं ये उन माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की बात कर रही हूँ जो कि लिटरेट नहीं है, बहुत कम उसमें से लिटरेसी लेवल्स है. अगर जो लिटरेसी लेवल हाईएस्ट इज मैट्रिक 10 ग्रेड, सो वो भी, तो उसमें हमने देखना है कि उनके लिए कौन सी एंटरप्राइजेस हैं जो कि वो आसानी से मतलब रन कर सकती हैं. फिर उसके बाद उनके लिए क्या अपॉर्चुनिटीज है इन टर्म्स ऑफ कैपिटल, उनको किन इंस्टीट्यूशंस के साथ लिंक करना है कि वो एक्सेस कर सकें कैपिटल को. फिर उसके बाद उनको, मतलब ये एक मुख्तलिफ स्टेप वाइज प्रोसेस है जो कि 6 to 8 months लगते हैं हमारे एक्सपीरियंस में, जिसमें खवातीन जो सी हैं वो होम बेस्ड वर्क से एंटरप्रेन्योर के स्टेटस पे आ जाती हैं. लेकिन फिर उनको रनिंग कैपिटल चाहिए होता है और साथ साथ हैंड होल्डिंग चाहिए होती है. लेकिन उसी प्रोसेस में बहुत सारी इकोनॉमिक लीडर्स इमर्ज हो जाती हैं जो कि विमेन टू विमेन कांटेक्ट जो है वो बढ़ता जाता है और वो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरे से सीखती हैं और ज्यादा एक्टिव होती जाती हैं. सो दिस इज समथिंग व्हिच वी आर डूइंग एंड दिस इज फ्रॉम आवर एक्सपीरियंस. Thank you. Thank you, Faria. I think आपने बड़ा comprehensive response दिया. एक चीज जो highlight की question के अंदर regarding online mentoring, I think COVID, while it was a pandemic, was also an opportunity in terms of fast tracking digitization in Pakistan. And now there is an opportunity to develop such
platforms in which we can interact or with each other through online meetings, Zoom. There's so many other platforms जिसके through हम अगर एक network बना ले तो इस किस्म की हम schedule किए जा सकते हैं network meets, round table, coffee table talks में फिर physical एक issue आ जाता है लेकिन online में ये perspective को address किया जा सकता है. I think we'll take one final question and then we will move on to our next speaker. But Umme Leila, I believe HomeNet se hai. If you could introduce yourself, and then if you have a question, could you kindly pose that question to our panelists? Ji, do we have Umme Leila? You had raised your hand. I think we're offline, okay? जी अस्सलाम वालेकुम जी. जी मेरा नाम जी उम्मे लैला है और मैं होमनेट पाकिस्तान को हेड कर रही हूँ पाकिस्तान में. एंड दैट्स एन ऑर्गेनाइजेशन वर्किंग फॉर द वुमेन इन द इनफॉर्मल इकोनॉमी, स्पेसिफिकली द होम बेस्ड वर्कर्स एंड द डोमेस्टिक वर्कर्स. सो यहाँ पे माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप की बात हुई और इसमें बहुत ज़्यादा जो भी एक्सप्लेनेशन फरिया ने दी है मैं उनको इंडोर्स करती हूँ. बट माय क्वेश्चन इज़ कि जो भी अभी यहाँ पे हमने डिस्कशन को सुना, बड़ी हेल्दी डिस्कशन थी, हमने बहुत सारे एस्पेक्ट्स को कवर किया, लेकिन व्हेन इट कम्स टू द माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप वी फेल टू सी दैट देयर आर नॉट मच available with regard to the policies, with regard to the services provided by the State Bank of Pakistan and different banks also, with regard to the State Bank's policy on women equality. So I think ये बहुत एक important चीज़ है और समेडा ने इसमें अगर लीड ली है तो we would like to see कि समेडा इसको कैसे take up करेगा. So my question was is with regard to the lady who was presenting the supply chain manufacturing, उनसे था और स्टेट बैंक के साथ था. दो क्वेश्चंस अगर वो आंसर कर सकें. स्टेट बैंक के साथ हवाले से मेरा ये था कि जो जितनी भी प्रोडक्ट्स इस वक्त हमें मार्केट में नजर आ रही हैं वो लिटरेट खवातीन के लिए एंटरप्रेन्योरशिप डेवलप करने के लिए हैं और वो अगर हम उनको माइक्रो तक लेके जा रहे हैं, सो वी आर इन सेल्फ, हम लोग उसका एक डायग्नोस्टिक अभी कर रहे हैं, वो इंशाल्लाह सबसे शेयर भी होगा कि वहाँ पे बहुत सारे निचेस हैं, बॉटलनेक्स हैं जिनको वो औरतें अवेल नहीं कर पाती और इसी वजह से हमारा जो रेशो है एंटरप्रेन्योरशिप का वो काफ़ी कम है. सो आप इसको कैसे देख रहे हैं, क्योंकि वुमेन्स बैंकिंग ऑन इक्वालिटी के हवाले से जो स्टेट बैंक ने कहा हुआ है वो कोलैटरल बिल्कुल जीरो है, लेकिन बैंक्स के जो चार्जेस हैं वो बहुत ज़्यादा हैं और जो पूरा सिलसिला ये होता है कि अगर वो बैंकिंग की तरफ जाती हैं लोन्स की तरफ अपने बिजनेसेस के लिए, तो वो जो रीपेमेंट का सिस्टम है दैट्स वेरी 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 टीडियस, तो वो शायद उसके लिए तैयार नहीं है. सो बैंक उसको स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की नई पॉलिसीज़ क्या हो सकती हैं अगर हमने माइक्रो एंटरप्रेन्योरशिप को डेवलप करना है पूरे पाकिस्तान में, और जो कि जुड़ा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग सप्लाई चेन के साथ, जिस तरह फाइका ने बात की कि हमें उस पूरी वर्कफोर्स को उसके साथ जोड़ना है. वो तभी हो सकेगा जब उनके लिए इस तरह की सर्विसेज जो हैं अवेलेबल हो सकेंगी. बहुत ज़्यादा वर्कफोर्स है, उसको हमें सप्लाई चेन के साथ जोड़ने के लिए तैयार करना है. और जो इंक्यूबेशन की बात हुई, मेरी उसमें ये सजेशन है कि समेडा इसको टेकअप करे गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के साथ और इसको हमें हर डिस्ट्रिक्ट में और हर डिस्ट्रिक्ट में हर तहसील के अंदर इसको सेटअप करना चाहिए, लोकल गवर्नमेंट को इन्वॉल्व करके, और वहाँ पे जिन ऑर्गेनाइजेशंस की आउटरीच है वो इसमें बहुत बेहतर किरदार अदा कर सकते हैं. सो दैट वाज माय क्वेश्चन एंड माय कमेंट ऑन दैट. सो थैंक यू सो मच. Thank you, Leila. Just first coming to the incubation centers. जी हमारा प्रोग्राम तो यही है कि over time we will scale up this initiative in collaboration with the provincial governments, local government के साथ, universities को साथ भी इसमें loop में रख लेके. जो आपका state bank से related question था, unfortunately our panelist from state bank had another engagement, she had to leave. Nevertheless, just to share with you, and you very rightly pointed out कि इस वक्त जो products हमारी government जो state bank offer कर रहा है, different commercial banks offer करते हैं, वो इस किस्म के नहीं है, वो माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स की तरफ गियर्ड नहीं है. उसके लिए एक प्रोग्राम विच इज अ वुमेन इंक्लूसिव फाइनेंस प्रोग्राम इनिशिएट किया जा रहा है, जिसकी वजह से हम एक पॉलिसी भी डिजाइन कर रहे हैं जिसके अंदर स्पेसिफिक टारगेट ही हमारा ये है कि वो खवातीन जो कि माइक्रो एंटरप्रेन्योर्स
who are on this very small side of business, उनकी support के लिए किस किस्म की financial products launch की जा सकती हैं, उसकी तरफ हम जा रहे हैं. So I think this has been a very pleasant discourse. So we've heard our panelists, we've taken a few questions from the audience. Before I move to the closing part, in which we are joined by another very important, well-known personality from Balochistan, I'd just like to circle around the table your final word to our panelists, your final words of inspiration for women entrepreneurs in Pakistan. I'll start with Faria. If you could, share with us your, vision for women entrepreneurship in Pakistan. Thank you. So I would, as a development practitioner, as an expert on gender, I would like to see inclusive approach. That is something we are talking of women who are in the urban centers or are to some extent endowed with some facilities, but उनके पास कुछ ना कुछ राब्ते मौजूद है, कुछ ना कुछ उनके पास सहूलियात मौजूद है. तो मैं चाहूंगी कि वो एक इंक्लूजन का जो एस्पेक्ट है और लीविंग नो वन बिहाइंड, जिस वक्त हम बात करते हैं इंक्लूजन को थोड़ा सा मजीद डीपली ले जाना चाहूंगी. जब हम खवातीन की बात करते हैं दूर दराज इलाकों में, तो वहां पे विमेन विद डिसेबिलिटीज उनको देखने की जरूरत है, ट्रांसजेंडर को देखने की जरूरत है, विमेन विद माइनॉरिटीज को देखने की जरूरत है. तो मतलब ये थोड़ा सा हमें अपना जो लेंस है ना, वो उसका फोकस ज्यादा शार्प करना पड़ेगा. क्योंकि आप देखें, आप एक खवातीन तक रसाई की बात कर रहे हैं जो कि माशी तरक्की की तरफ उनको लेके जाएगी. तो इन ग्रुप्स को भी शामिल होने की जरूरत चौंसी है, वो बहुत ज्यादा है और मेरे ख्याल में बहुत अहम है. एक बात. दूसरी चीज जो मेरे लिए एक बहुत अहम नुक्ता है, वो ये है कि खवातीन किसी ना किसी कैपेसिटी में माशी तौर पे एक्टिव हैं, तो उनको इकोनॉमिक एक्टर्स रिकग्नाइज करने की जरूरत है. उनको जानने की जरूरत है कि हाँ, वो केपेबल हैं, वो इकोनॉमिक एक्टर्स हैं और वो एक कारआमद फर्द है माशरे का और माशी तरक्की में उनका एक अहम किरदार है. तो मेरे ख्याल से हमें जो एक माइंडसेट चेंज के लिए एडवोकेसी साथ साथ करनी पड़ेगी कि खवातीन की एक्सेप्टेंस एज इकोनॉमिक एक्टर्स होनी चाहिए. That's it. Thank you, Faria. So inclusion and economic actors recognition. Masooma, आपके लिए क्या word होगा for women entrepreneurship development in Pakistan, taking it forward? Gee, it's very important that now it's the high time, I must say it's the highest time to let's all join hand together, all the champions in Pakistan, to give our share for this entrepreneurship development from every sector. और हम सब आपके साथ हैं और जो हमेशा से साथ रहे, और हमने किस तरह से हमने इकट्ठे होना है कि हमने अपना अपना शेयर देना है इसमें. Because when the prosperous woman, there is the prosperous Pakistan. So let's all work for the Pakistan through women entrepreneurship development. Thank you. So partnerships for you. Hasna. Yes. जी, I think for me सबसे जरूरी, अगर मैं honestly बात करूं तो mindset change होने की जरूरत है culturally. I think हमारा सबसे बड़ा impediment mindset है. उसके अंदर आपका religio, cultural, social issues आपके आ जाते हैं. जो आपका राइट है इस मुल्क में वो बहुत ऑर्गेनाइज्ड है, वो बहुत स्ट्रांग है. वो हर रिक्शे के पीछे अपनी एडवर्टाइजमेंट करता है कि औरत की जगह क्या है, यानी कि सिर्फ घर में. और मेरा ख्याल है कि हमारे जो थोड़े प्रोग्रेसिव लोग हैं जो समझते हैं कि इस मुल्क की तरक्की सिर्फ और सिर्फ
औरतों के इंक्लूजन से हो सकती है इकोनॉमिक, क्योंकि इट्स जस्ट प्लेन मैथ, लाइक आई सेड बिफोर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो मेरा ख्याल है अगर ये लिबरल प्रोग्रेसिव या मैं कहूँगी बैलेंस सेक्टर जो है उतनी ही ऑर्गेनाइजेशन के साथ और उतनी ही इन्वेस्टमेंट के साथ इस माइंडसेट को प्रोपेगेट करे कि औरत एक खवातीन हमारी एक हिस्सा है इकोनॉमी की, और इसमें कोई फैमिली सिस्टम को थ्रेट नहीं है। मेरा ख्याल है कि एक बहुत बड़ा, लाइक आई सेड, माइंडसेट ऑब्स्टिकल है कि फैमिली सिस्टम इज अंडर थ्रेट जहां पे औरत काम में ज्यादा इन्वॉल्वमेंट लेती है। रूट कॉज आपका यही है। जब तक ये माइंडसेट एड्रेस नहीं होएगा थ्रू एजुकेशन, तब तक आपको मैस स्केल पे चेंजेस नहीं नजर आएंगे। थैंक यू हसना। फाइनली फातिमा जी, Fatima, your final words. I think we've probably lost Fatima. Nevertheless, coming to the very, very important closing session, we are joined by Ms. Zeba Bakhtiar. She needs no introduction. She's former president of the Women Chambers of Commerce and Industry in Quetta. She's a public figure, an entrepreneur. I just go straight to Ma'am Zeba Bakhtiar. If you could share your inspiring journey of being a woman entrepreneur, being a public figure, and then sharing how do you see women entrepreneurship developing moving forward, and what kind of support structures do you foresee? So it's over to you to close today's session. You've heard through the Discord. I leave the mic to you. Assalamu alaikum. Thank you so much, Tanya, and assalamu alaikum to all you wonderful, inspiring ladies I've been listening to. I am really, really happy to have heard whatever I heard, because apart from my career in media of 32 years, which I think most people know about, for the past 5 years, I've been in Balochistan, which is Quetta, my hometown, because I had a family property there, which is my inheritance, and I had to develop it. So I ended up having no options but to go in and become the first woman commercial real estate developer, which opened my eyes to a lot of things. So, I mean, tracking back, a girl from Quetta who was born into a family where my father was a lawyer and a politician, going into media was absolutely unheard of in the 80s. And it was not as if, that I would say, कि जी मुझे बचपन से ये शौक था. नहीं, मुझे बचपन से, I was not aspiring to be a movie star since I was a child. I was actually trying to find my way, because our society is such that, every time a girl tries to find her way, it's like, everything is not your way. You can be a teacher, you can be a doctor, and उस ज़माने में तो engineer का इतना नहीं था. Now I'm really happy. I see so many female engineers and so many women in amazing professions. So that is another story. I won't go into that. But what I'm more concerned about is the female entrepreneur, because the time I have been working in Quetta, lots of women have come to me with family problems. Generally, they have a few children. They're cottage industry workers. The husband is remarried. He's not getting the maintenance. And they earn a very meager livelihood through whatever embroidery they do. Pehle waqton mein, when I was growing up, I remember my mother going to, there were these idaras, and it was a structured place where these women used to go and do embroidery, and the embroidery was of a much better quality, which generally everybody bought. It was the standard gift you give people, and it was all over the place. Now, with that having died, these women are fragmented all over the place. And personally, as a person who's collected cottage industry and who's loved embroidery, especially traditional jo hamara hai, Balochistan ka and Pashtun embroidery and so on. It's just the craft has died because these women have been fragmented all over the place. And again, you see, there are two things that I think we were talking about. We were talking about the educated and semi-educated women. And then there are also a very, very large population that I think it's very, very important to consider for our economy is the uneducated woman, but who is very competent in cottage industry. Because cottage industry, if we are structured, and जो थोड़ी बहुत चीजें बन के भी निकलती हैं southern Punjab से mainly या Balochistan से या Sindh से, they are not of a very good quality, which is why it's not something that you can
maybe give to someone as a gift or try to get orders for abroad, because the thread, the overall quality bilkul achhi nahi hai. And it's not impossible to improve the quality, but I just think that first of all, it is very, very important. Jo hum baat kar rahe the state bank ki, government ki, I feel that is a second stage. Our first thing should be how to structure these people. How can we structure the semi-educated women? Because we have to take limited time here. We have to sort out whatever we can sort out as women entrepreneurs. What can we do to sort out the situation and to sort of help the economy of the country? We don't have unlimited time. So we need to pick our challenges and pick our battles. कि हम अपनी सारी energy जो है ना consolidate करके focus करें. Now I feel that, you know, if all the ladies over here, you all have a lot of experience and great ideas. If we can somehow collectively form an agenda paper, stepwise हमें क्या कुछ करना है to culturally empower these women, ठीक है? If saying going and fighting with the men folk in the village Maulvi to get them out of their house is really not where we should be looking to put our energy right now. ठीक है भाई, अगर आपको इस stage पे घर पे बिठाना है, fine, involve her if she is educated enough to manage IT, get her the training so that she can do some work in IT and start earning a livelihood. If she is not educated and she is competent in any cottage industry, any craft, and there are a lot of women artists, fine artists who paint, who don't have spaces to exhibit. Now, if we can create platforms for them, basically they need a platform and they need a structure where, you know, there is maybe per ilaka one person handling them or something, but we have to be very careful of the middleman, because time and time again, I've visited places where the women are so exploited. The middleman takes 90% of the money and the woman gets a very, very small amount, which is not helping the economy at all. So if we can somehow get together and create this structured agenda, if they can be a moving paper on email or something, you know, for structure ek dafa ban jaye na, then we can each in our own little areas work to, because then we're working along where one mind and wherever we are, we're working in that area to kind of create the structure for whichever province we're in, whichever area we're in. Because it's very important to collect these women and give them platforms. अब हर एक micro level पे अपने घर में काम पे उसको कितना काम मिलेगा? I mean, I get calls from women every week कि भाई हमें कोई embroidery का काम दिलवा दो. Now, I don't have such a business. I've spoken to designers, but they have not given them anything. And those women, I mean, they're supporting children. They need to feed their children. It's that bad. ठीक है, मैं जो थोड़ा बहुत whatever work I can give them, I give to them. You know, with dignity, they're able to do something, but it's not as much as is required. So to structure the women, whether educated, semi-educated, or uneducated, we need to make an agenda, and ideally, if we could do that together and put our experience and our minds together and make this and somehow create some sort of a structure for them where their work can first of all be upgraded and brought to a level where people would like to buy it. Internationally, we have an option of somehow designing it and getting international orders so that we can get in foreign exchange and raise the lifestyles of those women as well over time. Like, I know two of my friends, one being the designer Rizwan Beg, the other is this girl called Mahnaz Karamat. Rizwan has basically trained a lot of rural women in his embroidery. And he says that, you know, from 15, 20,000, they've gone up to 60,000, earning 60,000 per month. Or wo jitna bhi kaam karwate kapron pe, he has a foundation, uske through, he gets it done by these women because he wants to empower those women. The same way Mahnaz has been working with rural women and she's been making evening bags, which are beautiful. So, you know, if you're going out to buy something, you would rather buy something which you know is making a difference somewhere. But again, it's all about creating a structure where, you know, the work can go into so many homes and also being able to monitor no person in the middle is exploiting them. Somehow now we have enough technology to know that the money is going to the woman who's done it. Of course, those who are more informed in technology will be able to figure out how that happens. But, you know, taking on a cultural battles take very long, and government basically, they don't really, I mean, some people care, but by and large, they have very, very many other things to look into.
So whereas once we have a final agenda, we want this, and we have done the basic groundwork of creating a structure, then we can go to them. But going to them at this stage and saying, asking them for anything, I feel it's premature. But I mean, I believe we can do it. I think a lot of mentoring is important. Very much mentoring is important. And because, like, again, if I speak about myself, through my career, I did not have a mentor. And now I think back at this point, if I had a mentor, there are so many mistakes I would not have made. There were so many challenges I would have dealt with better. But there's a total lack of mentorship, which is very sad. So how can we be available for these women to sort of guide them in the right way and see what we can collectively do? Because individually, though I'm sure we're all doing whatever, apne charag jala rahe hain, but if we can collectively create, what we want to do, and then somehow, work along with it with SMEDA to implement that. So that would, for me, is an ideal situation. That's my bit. Gee, thank you, Zeba. I think a few points that you mentioned regarding structuring women, then together we can all make that difference, and institutions and the private sector coming together is, I think, extremely important. You shared your journey and the importance of mentoring that you just highlighted, that, we might have avoided some of the challenges or dealt with them better had one access to a mentor at that time. You are truly an inspiration for us. I believe, have come to the end of today's session. This discourse is a step in acknowledging the contribution of women in Pakistan. I'm extremely grateful. SMEDA is extremely grateful to all our panelists who gave us time, shared their journeys, gave us new ideas on how to tackle the challenge of women entrepreneurship moving ahead. We must acknowledge that we, women, bring great value to Pakistan, because at the end of the day, we are Pakistan. Thank you very much for your time.